This one simple question will completely change how you think about your life. And this is what it is. What do you say when someone asks you who you are? Now, generally, when someone asks someone that who you are, or जैसे अगर मुझे भी कोई पूछता है कि तुम कौन हो, so generally हम आंसर करते हैं based on our profession, what we do, engineer, doctor, business owner. And up until now, this is what I used to answer, that I'm a business owner, I'm an entrepreneur, I have an agency and things like that. But let me stop you right here. क्या होता है ना गाइस कि जब भी हम ये आंसर करते हैं, हम बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारा काम है, जो हमारा टाइटल है, हम वही हैं. एंड दिस फैक्ट, दिस इज समथिंग that bothered me for a very long time, and it actually stopped me from getting the clarity about my own life. Because हमें अच्छा तो बहुत लगता है कि हम जब किसी को बोलते हैं कि यार आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, एंड we do these kind of stuff for most of our time in our life. जब हम बोलते हैं कि हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, या हम बिजनेस ओनर हैं, या हम किसी और प्रोफेशन में, we say that because we have spent most of our time doing that thing, and we want people to know us by that stuff. But I'm not in love with this thing right now. क्योंकि मुझे लगता है कि यार मेरी लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ, या जो मैं प्रोफेशनली करता हूँ, आई हैव एन एजेंसी, आई डोंट वांट पीपल टू नो मी बाय दैट ओनली. बिकॉज अभी रिसेंटली जब मैं थोड़े टाइम बैठा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, तब मुझे पता पड़ा कि यार आई हैव डन वे मच मोर इंटरेस्टिंग थिंग इन माई लाइफ देन मोस्ट पीपल actually think about and they want to do, but I've done most of the things. Let me tell you, okay, कि ये थॉट क्यों आया कि यार खुद को, आपको अपने प्रोफेशन से, आप जो कर रहे हो उससे आपको डिफाइन नहीं करना चाहिए. बिकॉज क्योंकि अगर आप जब खुद को उस चीज़ से डिफाइन करते हो, तो वो आपको बहुत ही छोटे दायरे में सीमित कर देता है, क्योंकि आपकी लाइफ इससे कहीं ज़्यादा है. Because even if you're a doctor or engineer or you're a business owner, you're a salesperson, you do not do that stuff 24/7 in your life. Okay? You are not that. That is just a part of your life. The real you is just you. जो आपका real person है, वो आप, बस आप हो. How you can define yourself apart from that profession only, and how you can add all the things that you in your life and show people that who you really are, not just that profession or the title that you have. क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इंजीनियरिंग आधी कर रहा था. सो मैंने काफ़ी टाइम, 4 साल इंजीनियरिंग की देखे, पढ़ाई देखी, फ्रेंड्स बनाए, रैगिंग देखी, लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आई सॉ. ओके, in terms of sport, I've played uh, state level football. I went for swimming as well. I went for bodybuilding as well, won medals in that. I won medals in arm wrestling as well. So I enjoyed my life. I played different sports and I made lots of friends. I went around with friends, traveled with friends, and I've done lots of different things in my life that people just imagine and just think about doing that stuff. इसलिए मुझे लगता है कि यार अपनी लाइफ का ना एक एक दायरे में, एक प्रोफेशन के अराउंड नहीं सीमित करना चाहिए. बिकॉज यू आर वे मच मोर देन दैट. ओके, सो दिस इज व्हाई आई थॉट I need to bring this thing up, and I need to talk about this because people can have interesting life. Because क्योंकि यार जब आप खुद को एक रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो ना कि यार यू आर, लेट्स से आपका एक जॉब है और आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हो, so your life, you, instead of making you as the main character of your life, you make that profession the main character or the main topic of your life, and you revolve all your life around that one thing.
आप सोते हो, जल्दी सोते हो क्योंकि आपको सुबह उठ के जॉब पे जाना है। आप पूरे टाइम काम करते हो, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो क्योंकि आपको जॉब पे जाना है। आप सिर्फ संडे को अपने फैमिली को टाइम दे सकते हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो क्योंकि आपको उस जॉब पे जाना है, क्योंकि आपने वो टाइटल ही अपना अराउंड बना लिया। बट नहीं भाई, मतलब मैं सोचा कि नहीं, माई लाइफ इज़ वे मच मोर देन दिस यार। भाई मेरे को अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारी चीज़ें नॉट बाय करनी है बट एक्सपीरियंस करनी है। और मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ जिसका लोग सिर्फ सपना ही देखते हैं। एंड टुडे एज वेल, एट दिस टाइम as well, I'm working from my home. I have an office in like nearby uh, home, my home as well, but I don't go to office that too much. I can whenever I want. I can work from anywhere in the world. I just need a laptop or a mobile phone and a decent internet connection. That's it. And without realizing, I've actually built the kind of life that I always wanted. I'm also building that and making it bigger. So that's why I thought, like, yes, this is the kind of life people actually want. And this is why I'm creating this video. I've created this channel as well, जहाँ पर मैं अपना आके completely raw और authentic जो भी मुझे कहना है, जैसे भी कहना है, वो एक किसी नीश के अराउंड ना हो, वो किसी एक बिजनेस के अराउंड ना हो, वो किसी टॉपिक के अराउंड ना हो, वो हो completely मेरे अराउंड। who I am, who is Rohit Singh Thakur, who is uh, this person, what he's doing in life, what he actually wants to do. ना कि मैं खुद को एक प्रोफेशन या करियर या कोई बिजनेस के अराउंड फिक्स कर लूँ, नहीं, दिस इज नॉट आई वांट। So I thought, let's go ahead and create a channel. Actually, my mentor uh, suggested me to create this channel. Uh, Digital Deepak actually suggested me to create this channel, and I've got, and I not got, actually stole this idea from a friend of mine, Adeep. He created a channel called Raw Deep, and I thought like I also need to create a channel like this where I can go ahead and talk about just about anything, and show people that who I am and what I'm actually doing. I have no intent of making money from this channel. I have no intent of selling anything from this channel. I just want to be me. I want to document myself, who I am, what I'm doing, where my life is going, and how I can like live the life completely unapologetic of, where I don't really need to answer anyone and I can share my thoughts, say things completely raw, authentic, and completely as it is, as what I thought about things. इसीलिए this video is not about editing anything and not cutting and copy pasting anything. ये वीडियो मैं सारे completely raw शूट करने वाला हूँ और आपको बस बताने वाला हूँ कि भाई क्या है मेरी लाइफ में and what I'm doing. And if you find it interesting, you can join me, subscribe my channel, and follow me, do things that what I'm doing, and build the kind of life that I am building. So tomorrow, कल से ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि मैं जो अभी तक आपसे जो बात की है ना, वो मैं एक्चुअली आपको शो भी करने वाला हूँ. So let's get started. Don't make your life, build your life around something that you're doing. Build your life around something that who you actually are and who you actually want to live like. Okay, so that's it for this video guys. कल से ये सारे videos बहुत interesting होने वाले हैं. So keep watching and subscribe to the channel if you want to, and if you want to build a life like I have right now. So keep watching and I'll see you in the next one.